Extending support to the steep rail fare hike by Narendra Modi government, Rashmidhar, the national vice president of BJP Women Wing, defended the rail fare hike, calling it a strong and effective measure to counter Congress's failure. Addressing media persons, Rashmidhar opined that there should be no problem in paying Rs 50 more for a rail ticket provided passengers get better facilities. Dhar also asked the people to stop the outcry on fare hike. The government has increased rail passenger fares by 14.2% and freight rates by 6.5%, which has led to an outcry by the opposition parties. अगर आपको फैसिलिटीज चाहिए तो रेल किराया बढ़ गया तो आप सारा साल थोड़ी ट्रेवल करते हैं। अगर साल में आप एक बार ट्रेवल करते हैं तो आपको अगर 50 रुपए ज्यादा देने पड़े तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी को चुभेंगे, चुभने भी नहीं चाहिए। अगर आप फैसिलिटीज अच्छी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी रेल यात्रा जो है वो बड़ी सुखद हो, आपको वहाँ अच्छा भोजन मिले, आपको स्टे जो है वो आपको अच्छा मिले, आपकी रिजर्वेशन अच्छी तरीके से हो, तो अगर थोड़ा सा रेल किराया बढ़ भी गया तो उसमें इतनी हाय तौबा मचाने की मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता है। Powered by NNIS.